important announcement to make. In this fifth edition of दत्ता India's ये थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ ना यार biggest women's run in Mumbai, we have a new partner. A very exciting, let me tell you, a very exciting new partner. The partner is Colors. I'd now like Mr. Raj Nayak and I'd now, Snapchat, can I talk Snapchat? Okay. I'd now like Mr. Raj Nayak and Ms. Archana Landekar to give Malishka the first bib of the Colors Pickathon 2016 in the SoFit 10K. Go for it. स्टील दत्ता है दत्ता बोल रहा है लोग यार The first win, ladies and gentlemen, the SoFit 10K in the Colors Pickathon with inspiring partners Bajaj. White shirt. White shirt. व्हाइट शर्ट स्टील याचं नाव काय आहे? प्रशांत अरे खाली बाजूने गेली हो स्टील अरे बैठो यार थैंक यू सो मच थोडीशी जागा ठेवा तुमच्या कार्डमध्ये अजून 2 गिफ्ट द्यायचे. I'd like to now have तो बोल ना थोड़ा यार आणि बूट. बाय बाय. हाँ तो अच्छे से हम लोग को भी लेने दे जरा Thank you very much. Thank you, ladies. And the purpose, of course, of today's program is to announce the registrations for एक सोलो उनका सोलो एक मिनट आप
अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं हिंदी में बात करूँगी। करो करो। तो मैं कहना पिंकाथॉन चाहूँगा के बारे में बोलो। पिंकाथॉन में 2012 में अनुषा ने भी भाग लिया था। उन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ की थी, बहुत अच्छी तरह से की थी, बहुत और अच्छी। बहुत अच्छी तरह से। और मैं कहना चाहूँगा तब से और आज तक इस साल मुंबई में 5वीं बार हम पिंकाथॉन करने जा रहे हैं। कम से कम 11,000 महिलाएं दौड़ेंगी अक्रॉस 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर डिस्टेंस। बहुत बदलाव ला चुका है पिंकाथॉन। पहले औरतें कहती थी कि नहीं, हम 100 किलोमीटर भी नहीं कर सकती हूँ, 200 मीटर भी नहीं दौड़ सकती हूँ। अभी 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर एकदम बहुत ही सहज तरीके से औरतें दौड़ रही हैं। सो एंड अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट इन मुंबई, लेकिन पिंकाथॉन 8 शहरों में आज हम करते हैं। 8 शहरों में पिछले साल कम से कम 75,000 महिलाएं दौड़ी। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस ऑफ द इवेंट। What does Pinkathon mean to you? And what इट्स अमेजिंग। You know what? First of all, सब लड़कियों आते हैं यहाँ पे क्योंकि मिलन सोमन है. Okay, that's the inspiration. उसके बाद सब दूसरे inspirations आते हैं. So obviously breast cancer is very, very important to me. I think women should be aware. I think they should be aware of their bodies. Forget just breast cancer. They should be aware of their bodies. Regular checkups करना चाहिए. And I think so. Milind has started a really good initiative for that, and I'm just really happy to be a part of it. I'm very, very happy because I think women today in our country should know a lot more than they do. do you think fitness awareness has increased? Of course, I think 100%. it's increasing every day. Pinkathon is actually just a small step. The media is doing such a lot of work. आजकल लोग इंटरनेट पे देखते हैं, इतना अवेयरनेस बढ़ रहा है, सिर्फ शहरों में नहीं लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों में, विलेजेस में भी जा रहा है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, बहुत अवेयरनेस हो And रहा I है. think fitness has become cool. I think वो बहुत cool है, hip है. मतलब हमारे देश में हमारा ट्रेडिशन नहीं है, कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का, एक्सरसाइज का पहले से. सो वी आर अ लिटिल बैकवर्ड इन दैट रिस्पेक्ट. लेकिन आज क्या हुआ है, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर रोटरी क्लब, सबको रनिंग इवेंट्स करने हैं बिकॉज दे कैन सी दैट पीपल आर रियली एंजॉइंग दिस काइंड ऑफ इवेंट्स. दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट्स एंड पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू. इसकी वैल्यू क्या है हमारी ज़िंदगी में, वो लोग समझने लगे हैं. I think also people should understand that fitness is a release. There's a lot of stress, work में, school में, education, everything gives you a lot. Relationships में, I think there's a lot of stress, and I think fitness एक ऐसा release है. So I think it gives you a lot of happiness to be fit. Is there also Bollywood celebrities also joining this initiative on 18? Well, they're not joining this event, but they're doing a lot of work on their own in different fields to spread awareness about fitness. Will you approach any star in future? We don't need to. To us, the stars are the women who participate. ये event इतना बड़ा हो चुका है because women have understood कि हमें इसमें भाग लेना है. Women have come together और हम actually किसी celebrity या star को नहीं लाना चाहते because उसमें distraction होता है. I think celebrities आते हैं on their own to participate. Participate करते हैं. वो अच्छा है. हाँ. इस इवेंट में जैसे अनुषा दौड़ी है, तारा शर्मा दौड़ी है, लीसा हेडन दौड़ी है, गुल पनाग दौड़ी है. हम उनको सेलिब्रिटीज़ नहीं मानते, हम उनको इंस्पिरेशनल इंडिविजुअल्स मानते हैं who already believe health and fitness is important and they are just inspiring thousands of people around them. From the industry, who do you think has the best, like the fittest body? Milind Soman. Anusha Dandekar. Apart from both No, but really, I mean, he's looked like this for I don't even know how long. He just doesn't. Since you were a kid. Since I was a kid. But I'm just saying that he doesn't. I just don't understand. You know, he's one of those people that wakes up like this. It's irritating. And goes to sleep like this. And goes to sleep like this also. No, No, but there are a lot of celebrities today, a lot of actors. अगर आप देखते हैं 80s में इतना अवेयरनेस नहीं था, बिल्कुल नहीं था. But today every actor, every celebrity, every famous person अगर अपना चेहरा पब्लिक में दिखाना चाहता है, they have to be fit. They have to exercise. They have to show a glow on their face and a fit body. I think besides Milind, Karan Kundra has a very hot body. कौन है ये सब? About collaboration with Colors, I have to ask both of you that will you ever participate on Big Boss? Never. I love you, Raj Naik, and I love Big Boss. It's very entertaining, but मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि I will go mad, and if we were there, we'd probably end up killing each other. But I think therefore it's quite a great test of mental fitness. नहीं नहीं मुझे mental toughness fitness नहीं to be चाहिए. in a I'd rather situation like that physical कि सब लोग fitness. पागल हो जाते हैं
जो उन्होंने एक्चुअली अपने लाइफ में किया नहीं वो करने लगते हैं. And to be really able to understand yourself, to center yourself, to go through that experience is very, very important. पर एक्चुअली मिलिंद I कुछ may never करेगा नहीं. participate, No, but I think it's a good exercise. I think if Milind was, Mental exercise. yeah. I don't have that many days to spend in a house. Oh please, 1 second. If Milind was participating, do you know what he would do? He'd be on the treadmill all day. There's a treadmill in the house? Yeah. Oh, good. Maybe I'll think about it. Are you guys watching this season? And are you rooting for anyone? My friend, one of my friends is in it, Rahul Dev. Yeah, and he's doing And I've He's seen a him- cool I've seen him. guy. He's a cool guy. He's a very shy person, doesn't talk a lot, but he's still there. So I guess the public likes him. Yeah. So yeah. Thank you.